Me and Fahama are going to be discussing arterial blood gases. So I know it's a very high yield topic, but it's also very confusing as well. So we have tried to make it very simplified version of it. तो सबसे पहले यू गाइज नीड टू नो ऑब्वियसली आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो तो आपको पता होना चाहिए वाई डू वी नीड टू परफॉर्म दिस थिंग लाइक आर्टीरियल ब्लड गैसेस लेते क्यों हैं. सो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेशन चेक करने के लिए कि आपकी ब्लड में हाउ मच ऑक्सीजन इज़ देयर, आपका एसिड बेस मतलब पीएच आपकी नॉर्मल है, इफ इट्स अबव और इट्स बिलो द नॉर्मल वैल्यू. And if you're giving any intervention, for example if a person is on vent or if you're giving artificial oxygen, तो उसके अंदर वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, if there's enough oxygen, if you can also check for electrolyte therapy as well through ABGs. When do we not go for ABGs? Contraindication obviously infection at the site, AV fistula हो सकता है, there is increased bleeding disorder, susceptibility होती है, तो then we avoid doing ABGs, right? So sample, we can take samples for ABGs. आप blood कहाँ से draw कर सकते हैं? You can draw it from radial artery, you can draw it from brachial artery, or we can also draw it from femoral artery as well, right? So there are three to four basic steps you need to know for ABGs. सबसे पहले आप pH देखते हो, आपको BCQ में आपको SP में अगर आपको केस दिया जाए, सो फर्स्ट यू नीड टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच कैसी है. अगर पीएच बढ़ी हुई है या पीएच कम है या पीएच बढ़ी हुई है तो वो देखोगे सबसे पहले. देन सेकेंडली आप देखोगे कि कंपनसेशन, इफ़ देयर इज़ एनी कंपनसेशन प्रेजेंट और नॉट, एंड देन यू लुक फॉर एन गैप, इफ़ इट्स इंक्रीज्ड और इफ़ इट्स डिक्रीज्ड और इफ़ इट्स विद इन द नॉर्मल रेंज, राइट? सो फर्स्ट स्टेप यू नीड टू नो कि पीएच, व्हाट इज़ नॉर्मल पीएच. आपको तीन चीज़ें वैल्यूज़ तो लाइक यू नीड टू नो फोर वैल्यूज़ विच इज़ पीएच, यूसी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, यूसी फॉर बाइकार्बोनेट. सो दीज थ्री वैल्यूज़ यू डेफिनेटली नीड टू मेमोराइज कि इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है. देन यू आर गोना बी एबल टू आइडेंटिफाई इफ इट्स एसिडोसिस और अल्कलोसिस, राइट? सो एसिडोसिस में क्या होता है? नॉर्मल पीएच इज़ 7.35 to 7.45. एसिडोसिस के अंदर क्या होती है? व्हेन द पीएच इज लेसर देन 7.35 देन यू सेड दैट इट इज एसिडोसिस. अल्कलोसिस में क्या होता है? जब पीएच 7.45 से बढ़ जाती है देन यू से दैट दिस पर्सन इज हैविंग अल्कलोसिस. ठीक है, सो दैट वाज वेरी सिंपल. ठीक है, दिस इज़ द सेम थिंग. यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट. एसिडोसिस डाउन, pH is decreasing. Alkalosis, it's kicking up, pH is increasing more than 7.4. So यहाँ से हम बात करते हैं कि what happens in acid base disorders. So firstly हम बात करते हैं एसिडोसिस के अंदर. एसिडोसिस के अंदर हमें पता था कि pH जो होती है वो कम हो रही होती है. ऑब्वियसली 7.3 से इट्स गोइंग डाउन. अब वो दो केसेस में हो सकती हैं. ईदर इट कैन बी रेस्पिरेटरी और ईदर इट कुड बी मेटाबॉलिक एज वेल. ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी में आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड को, मेटाबॉलिक में यू लुक एट बाइकार्बोनेट को. Now the level of carbon dioxide normally is 35 to 45 and level of bicarb normally is 22 to 26, right? नाउ यू लुक फॉर एसिडोसिस के अंदर क्या होता है? पीएच तो कम हो रही होती है दोनों केसेस में, बट इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस योर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स गोज अप लाइक इट्स ग्रेटर देन 45. अब नाउ यू थिंक ऑफ कंडीशंस कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स किन किन कंडीशंस में इंक्रीज़ हो सकती हैं. ऑब्वियसली जब आपका रेस्पिरेटरी सेंटर, आपको ब्रेन का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर उसको सिग्नल नहीं मिल रहे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े जा रही है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑल ओवर इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट? लंग डैमेज, व्हेन योर लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो लंग का एक वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ लंग फंक्शन ऑफ लंग इज़ टू रिमूव एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन योर लंग इज़ डैमेज तो लंग जो होगा वो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं करेगा, देन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है. एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कोई चीज़ है जिसकी वजह से योर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ योर बॉडी, डिक्रीज वेंटिलेशन ऑल ओवर ना, तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा एंड दैट विल लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. मूविंग ऑन टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ऑब्वियसली समथिंग हैज़ टू डू विद मेटाबॉलिज्म, राइट? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होगा? द बाइकार्ब लेवल गोज डाउन. ठीक है, अब वो किन कंडीशन में हो सकता है? मेटाबॉलिज्म, यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ द मेटाबॉलिक थिंग्स जिसकी वजह से बाइकार्ब एक्सक्रीट आउट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा. नाउ इट कैन बी इन डायरिया, एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, आपका बाइकार्ब एक्सक्रीट होगा, एसिडोसिस हो सकती है मेटाबॉलिक. इसके अलावा ऑब्वियसली व्हाट, अब आप ये बताओ, यहाँ पर जैसे लंग का फंक्शन होता है वो इम्पेयर हो रहा होता है, यहाँ पर रीनल का फंक्शन इम्पेयर हो रहा होता है. रीनल इज़ नॉट, योर किडनीज
बेसिकली व्हेन दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, वो एक्सेसिव तौर पर जो होता है बाइकार्ब को रिलीज़ करता रहता है एंड दैट विल लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, राइट। दिस हैज़ टू बी, यहाँ तक अगर समझ जाओगे तो इसका ऑपोजिट ही एल्कलोसिस के अंदर होता है। तो एल्कलोसिस के अंदर क्या होता है, यू नीड टू नो कि पीएच जो होती है दैट गोज़ अप अबव 7.45, राइट। अगर 7.45 से चली जाएगी देन यू नो कि इट्स एल्कलोसिस। अब आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो कि इफ़ इट्स रेस्पिरेटरी और इफ़ इट्स मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी में देन अगेन यू ऑब्वियसली लुक एट कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक में आप देखते हो बाइकार्ब को। अब एल्कलोसिस में पीएच बढ़ रही है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगी, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ हो जाएगी। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर क्या हो जाएगा, बाइकार्ब जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इट्स लिटरली द ऑपोजिट ऑफ एसिडोसिस। एसिडोसिस समझ आ गया, दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ कब होगी, जहाँ पर इंक्रीज़ हो रही थी बिकॉज ऑफ डिक्रीज वेंटिलेशन। अगर आप एबनॉर्मली वेंटिलेशन इंक्रीज़ कर दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो अपनी लेवल से, अपनी नॉर्मल वैल्यू से विच इज़ 35 till 45, वो इससे भी, वो 35 से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे साइकोन्यूरोसिस लाइक पैनिक अटैक्स में, लाइक आप एक्सेसिव हाइपर वेंटिलेट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ अ कंडीशन, यू आर इन अ लिफ्ट, आप हाइपर वेंटिलेट करोगे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो जाएगा, देन यू गोना से कि ओ इस बंदे के अंदर क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रही है। नाउ कमिंग टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, वो कंडीशंस का सोचो जिसकी वजह से बाइकार्ब जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब वो इसके अंदर हो सकता है व्हेन देयर इज़ एक्सेसिव एल्डोस्टेरॉन, व्हेन देयर इज़ वॉमिटिंग गैस्ट्रिक कंटेंट्स, उसके अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आइंस जो होंगे वो लॉस होंगे, देयर विल बी ऑब्वियसली इंक्रीज बाइकार्ब की रिटेंशन होगी उसके अंदर हो सकता है, और या तो आप डायरेक्टली अल्कलाइन ड्रग्स को इंजेस्ट कर लो, दीज ऑल विल लीड टू इंक्रीज बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन एंड दैट विल लीड टू एल्कलोसिस। इट्स वेरी सिंपल, ऑल यू नीड टू नो इज़ नॉर्मल लेवल्स। रेस्पिरेटरी के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उससे रिलेटेड होगा, मेटाबॉलिक के अंदर बाइकार्ब से रिलेटेड होगा। एंड ये जो इसमें एग्जाम्पल सिचुएशन के तौर पर सोचोगे सो इट्स मोर ईजी। सो नाउ Fahama will discuss these things in detail and few other cases so that it's understandable to you guys. Okay, Assalamu alaikum guys. So I'm going to be talking about the same cases that Mehak spoke about, but a little more detail. So पहली चीज़ you need to know is that एक आपके पास mnemonic है, ये वाला, ठीक है, acid base का, respiratory opposite and metabolic equal. What this means is that अगर pH बढ़ रहा है और उसके साथ जैसे carbon dioxide कम हो रहा है, you can see that both these factors are going in opposite directions, right? So that is going to result in a respiratory condition. Okay, you know that this is a respiratory pathology when they're going in opposite directions. Alright, so pH अगर बढ़ता है, carbon dioxide कम होता है, तो that is alkalosis, और इसका vice versa would be respiratory acidosis. And metabolic, it's going to be going in the same direction. अगर pH बढ़ेगा तो उसके साथ साथ बाइकार्ब भी बढ़ेगा, तो उसके अंदर metabolic alkalosis होगा. अगर pH गिरेगा उसके साथ साथ बाइकार्ब गिरेगा, which is metabolic acidosis. ठीक है? Now, when we're talking about an uncompensated acid-base disturbance, what I mean by that is that in these conditions, pH deranged होंगे, ठीक है? Either it will be acidemia or alkalemia, right? तो अगर respiratory acidosis हो रहा है तो उसके अंदर pH आपका कम होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड की concentration बढ़ जाएगी और आपका बाइकार्ब normal होगा, ठीक है? This happens when there is respiratory depression, for example with opioid overuse या कोई CNS का trauma हुआ है जिसकी वजह से respiratory centers of the brain are not functioning the way that they should be. This can result in respiratory acidosis. Similarly, like Mehak said, when there is a lung pathology, जैसे COPD जिसके अंदर you in this condition you would know कि breathing out is very difficult, right? तो उसके अंदर they are hypoventilating, resulting in increased amount of PaCO2 within the body. Similarly, in respiratory alkalosis, pH is going to increase, carbon dioxide will decrease, but bicarb will remain relatively within the normal range. ठीक है? इसके अंदर hyperventilation होता है, right? So either the person is in severe pain or they're in they're having a panic attack or something of that sort. So what happens is that because their minute ventilation increases, they're breathing out way more than they would normally breathe out. तो उनका respiratory rate जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वो हर ब्रेथ के साथ अपना
carbon dioxide excrete करेंगे. So they will present with symptoms such as lightheadedness, dizziness. They'll feel really like nauseous as well. ठीक है? Then in metabolic acidosis, your pH decreases, but your PaCO2 remains normal. ठीक है? And your bicarb also decreases. So like I said, this is a very clear example of what the mnemonic was before. So metabolic acidosis occurs in diabetes. So basically type 1 diabetes के अंदर एक complication होता है जिसको हम diabetic ketoacidosis कहते हैं. ठीक है? इसके अंदर ये होता है कि because there is accumulation of something known as a keto acid, the person starts to become like उनके अंदर acidemia होने लगता है. And by acidemia I mean increased level of acid within the blood. Emia just means in blood. ठीक है? Then in shock it can happen, in renal failure this can happen. In metabolic alkalosis, it's the same thing that pH बढ़ेगा और bicarb बढ़ेगा same direction के अंदर बढ़ेगा. ठीक है? This happens when there's sodium bicarbonate overdose. Like she said, whenever you're taking some sort of alkaline drug का ingestion हो रहा है तो ये हो सकता है. Prolonged vomiting के अंदर ये हो सकता है because obviously there is an electrolyte imbalance when there is either diarrhea or vomiting, right? ठीक है. दो तरह के होते हैं, या तो it can be partially compensated or it could be fully compensated, right? So in partial compensation, all three values of bicarb, carbon dioxide, and the pH are going to be deranged. And in fully compensated, only your carbon dioxide and bicarb levels will be या तो ऊपर या नीचे, but your pH would be within its normal limits. ठीक है? So basically what happens is that when there's a primary disturbance like respiratory acidosis जिसके अंदर carbon dioxide बढ़ रही होती है, the body will compensate for it by creating more bicarb, ठीक है, in order to maintain the pH within the blood. And this is the same concept that applies to all four of these disturbances, ठीक है? It's describing the same thing again in this slide. So let's talk about anion gap. An anion gap measures the difference between the negatively and positively charged electrolytes within the blood. So in serum cations, you have measured जो आप कर रहे होते हैं उसके अंदर cations sodium होता है, unmeasured are your calcium, magnesium, potassium, and in serum anions you're only measuring bicarb and chloride, and in unmeasured you have a lot more anions. ठीक है? So the reason why there is a gap that's normally present is because we are measuring only chloride and bicarb in the anions. We're not measuring a large percentage of them, which are actually plasma proteins like albumin or organic anions as well. ठीक है? So the normal anion gap would be from 8 to 12. But it's important to note that the blood itself is electrically neutral. So that means they're going to be balanced within the blood. We're just measuring it in a way that we get a anion gap. All right? So we measure this by taking sodium concentration and subtracting it from the sum of chloride and bicarb. ठीक है? So anion gap is especially important in checking what type of metabolic acidosis someone has. ठीक है? So if it's a normal anion gap, then you would have diseases like mentioned over here, and if it was a high anion gap, you would have diseases like mentioned over here. ठीक है? Now let's talk about the cases. So a patient known to have COPD presented with a 3-day history of fever, shortness of breath, and productive cough of yellowish sputum. ABGs are pH of 7.25, carbon dioxide is 80, and bicarb is 34. In this case, we can see that carbon dioxide is massively increased. ठीक है? Even in comparison to bicarb, which is slightly increased, it is increased a lot more than its normal value, almost 2 times, right? तो उसके अंदर we know that this is our primary issue then. इसके अलावा जब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो रहा है और pH कम हो रहा है, so this would be a case of respiratory acidosis. ठीक है? And this also is clear because we've discussed the fact that with lung pathologies, respiratory acidosis happens due to decreased ventilation. ठीक है? Case 2, a 20-year-old medical student having a panic attack before an exam. ठीक है? pH is 7.6, carbon dioxide is 24, bicarb is 23. So, our carbon dioxide is pretty low, bicarb is within the normal range, and pH is increasing. So this is respiratory alkalosis. A 20-year-old patient comes to the ER with nausea, vomiting, and abdominal pain. The patient is hyperventilating with labored deep breathing and has a fruity odor in their breath. ठीक है? So ABGs are done. So इसके अंदर we're getting pH of 7.2, carbon dioxide is 20, and bicarb is 8. So this is a case of metabolic acidosis. It's a classic case of DKA.
Case 4 is a 2-year-old child who is lethargic and dehydrated, has a 3-day history of vomiting. ABGs are as follows. So if you guess this was metabolic alkalosis, you would be correct. Okay, so this is it. Thank you guys. Allah Hafiz.